अब जो एक recent times में प्लेयर पे जितना लोड आ गया, वर्कलोड, 10 लीग्स एंड देन क्रिकेट, T20 क्रिकेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एज कम्पेयर टू वन डे टेस्ट. यू थिंक वो प्लेयर मैनेजमेंट भी अब सही नहीं हो पा रही, जिस वजह से इंजरीज भी बढ़ रही हैं सर? Probably that's why जो आपका मेन बॉलर है शाहीन नसीम शाह, I believe I've been reading all the news like you guys have been. क्योंकि मेरी इनसाइड सोर्स नहीं है तो हर महाराष्ट्र क्रिकेटर आ कहता है इनसाइड सोर्स है, न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा. आई डोंट वांट ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम यू मैन, आई जस्ट वांट सॉल्यूशंस ऑन क्रिकेट, दैट्स इट. वी हैव पीपल प्रोफेशनल्स हु आर गोना गिव अस ब्रेकिंग न्यूज़. So Naseem Shah was complaining during LPL, Lankan Premier League. No, वो दुनिया में आप देख लें, आप दूर ना जाएं, हम सारे मुल्क के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते जो उनका सिस्टम एक बना दिया उन्होंने. इन द NCA, द नेशनल क्रिकेट अकेडमी इन बैंगलोर, नाउ बिफोर आई थिंक अर्ली डेज इट वाज राहुल द्रविड, श्रीनाथ, Ganguly, now it's Lakshman is running the whole show there. And rehab, they have the best physio. Now if you notice, all the staff with Indian team was all Indians. So they planned this 10 years ago. IPL से सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हायर किए, अपने लड़के उन्होंने ट्रेन कराए, एंड नाउ दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट. द रीहैब इज रियली गुड. वी डोंट इवन हैव अ रीहैब. वो एहसानुल्लाह, उसका शोल्डर का प्रॉब्लम, उसका इसका प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है 2 दफ़ा. कम ऑन, इज 20, इवन यंगर देन हिम. व्हाई? ऑपरेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट. आई मीन अब वो पैन डॉक्टर जो है, इट्स जस्ट जो कॉमेडी. माई सजेशन और रिक्वेस्ट टू जो भी PCB का चेयरमैन आता है, just remember one thing, try to leave some legacy. कितनी इस उम्र में कितनी नौकरी एक फेवर दे दोगे लोगों को? Why keeping people unnecessarily? That's why cricket should be run like professionalism. I know Prime Minister pattern है, but I don't get it. It's the only सर आपके रिक्वेस्ट पहुंचने तक कुर्सी से उतर जाता होगा बेचारा सर. 3 साल उतर चुके हैं. अच्छा, like how do you see Babar Azam's captaincy? क्योंकि उन पे काफी ज़्यादा discussion. Look, he has been captain for 4 years, and sometimes people in Pakistan should understand that performance matters. As a batter, he is no doubt one of the tops, one of the modern greats. He's on the rise. He's on the right track. There's no point comparing him to other batters of the world. He's unique. He's different in his own style. और कप्तानी 4 साल से कर रहा है, so वो outside से ठीक है, everybody is criticizing him. Obviously, when things don't go well, except to be criticized. हमसे इससे भी बुरा हुआ, हमें तो वापस नहीं था आने दिया जा रहा घर भाई. आप लोग फ्लाइट ही अलग हो जाते हैं. नो, 96 का हम क्वार्टर फाइनल हारे हैं हम इंडिया से, जिससे मैं खेला भी नहीं हूँ. उसमें हमें फ़ोन आया मुझे कि आप लाहौर लैंड ना करें फ्रॉम PCB. तो मैं क्या कितने जावा. एंड देन वी गॉट लैंडेड इन कराची एंड स्टेड हियर एट माय इन-लॉज फॉर अ वीक. तो थिंग्स काम डाउन. बट या कमिंग बैक टू बाबर्स कप्तानी, अभी तक कोई उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नजर नहीं आई मुझे. देखो ना, 2-3 साल में बंदा सीख जाता है. बाबर हैज टू ऑल दीज स्क्वाड, जैसे 15 में इब्रार नहीं है फॉर इंस्टेंस, एंड 2 लेग स्पिनर्स हैं. ये तो नॉट ब्लेम, बट ये इसमें कप्तान का इन्वॉल्व, तो जब तक कप्तान 15 में इन्वॉल्व नहीं होगा काम चल नहीं पाएगा. you see variation या वैरायटी जब आप कहते हो तो 3 तरह के स्पिनर होने चाहिए. रिस्ट स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर, and then the either left arm spinner या off spinner. You have what you call it, अपना off spinner हमारा जो है part time इफ्तिखार, नहीं sorry इफ्तिखार, सलमान अली होगा. Agha Salman is there as well as is an all rounder, isn't he? Agha Salman, then you have Nawaz, and then you have 2 right arm leg spinners. So Ibrar should have been a incredible inclusion in the squad, because बाकी दुनिया ने उसको भी देखा नहीं हुआ. Element of surprise, if आपको याद हो 2008 में जब ये नया इनका मिस्ट्री स्पिनर आया था श्रीलंका का, मेंडिस, अजिंता मेंडिस, है राइट, दिस इज द नेम. या अजिंता, हाँ, 2008 में उसने इंडिया के खिलाफ पहले मैच में श्रीलंका ने उसको नहीं खिलाया. आई थिंक दूसरे या फाइनल में खिलाया. 6 विकेट, he's got to 15-16 runs. So these are the tactics he has to learn, and he hasn't learned that anywhere as yet. So that's where the problem is as well. And obviously जब आपकी टीम हार रही हो तो वैसे ही आप तितर-बितर लगते हो सारे, including captain. Do you think हमने क्या होता है ना, जैसे कोहली जब कैप्टन बना तो it was affecting his performance.
कि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया तो उससे हर चीज़ ख़राब हो रही है. डू यू थिंक वी शुड थिंक अबाउट के रिप्लेसिंग, ताकि बाबर का जो असली जो ट्रू गेम है वो रहे वहाँ पे? Look, you have to have an option with you. Plan A, Plan B, Plan C. बाबर को अगर हटाना है तो किसको बनाना है वो भी तो सोचना है. So just for the हटाने के sake के लिए there's no point unless you have somebody better. He might learn sooner the better for Babar, but obviously it does affect your performance. अब मानो ना मानो, because there is stress being a skipper now this day and age with social media and all. So yeah, it affects. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.